हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है टू साउंड्स ऑफ लेटर एस। समटाइम्स एस, समटाइम्स जेड। There are two words. We will come to know the difference between where we are using when we pronunciate the words there, Z or S. So 26 letters in the alphabet and 44 sounds are there. कई बार एक ही लेटर के दो दो तीन तीन साउंड्स होते हैं. बेसिकली टू रूल्स आर देयर. वी आर यूजिंग Z or S. Easy. We are not saying easy. Easy. We are reading easy. Z sound is there. Rule number 1. Vowel before S. Vowels, 5 letters are there. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. So जो भी शब्द वॉवल्स से पहले बनता है, there we can pronunciate Z, not S. Easy we never call. We never pronunciate this word, right? Easy, Z sound is there. Tuesday, Z sound is there. Visit, Z sound is there. Nose, Z sound is there. Husband, Z sound is there, right? One more example I want to give you. Was, we never says was. Was, Z sound is there. Gives, Z sound is there. Wherever I put underline that, Z sound is that there. His, Z sound is there. Rose, OS, Z sound is there. Because नहीं कहेंगे, because Z sound is there. Here also the same as A, E, I, O, U. So S शब्द से पहले वॉवल्स आते हैं, उसके बाद अगर S लगता है किसी वर्ड्स में तो दैट इज Z, right? So this is very common and very easy to remember most of the word. Note करिए, here 5 vowels A, E, I, O, U, right? Here also A, I, O, U. So here also easy A vowels है, ठीक है? ट्यूसडे में ई वॉवल्स है, विजिट में आई वॉवल है, नोज में ओ वॉवल्स है, हस्बैंड में यू वॉवल्स है, राइट? हियर ऑल्सो सेम. आफ्टर डब्ल्यू ए इज अ वॉवल, आफ्टर जी आई इज अ वॉवल, gives E is a vowels here, right? Here I vowel is there. Rose में O is a vowel. Because में U is a vowel here. ठीक है? S से पहले वाले जो भी शब्द हैं, that they are vowels. Here also before S से पहले वाले जो शब्द हैं, always they called vowels. So here we conclude in the last also the same words here as here or after that also. So I hope you understand this video is for not KG nursery classes students
or the kids. This is third onwards classes, third, fourth, fifth standard. Rule 2, voiced sound before S, unvoiced sound before S. So in rule number 1, I told you already 44 sounds are there. 26 alphabet letters. So voiced sound like B, D, J, Th, D. Unvoiced sounds like P, go Pa, Ta, Hua, Thi. Right? Here also बोलने में आएगा ये द, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी कहाँ पे द बोलना है, कहाँ पे दी बोलना है, related to vowels only. And here the or the or think. Voice sounds before S like bags. We always saying bags. Z sound is there. Friends. Z sound is there. ये वॉइस साउंड बिफोर एस है, ठीक है. फ्रेंड्स, जेड साउंड इज देयर. फ्रॉग्स, जेड साउंड इज देयर. सिस्टर्स नहीं कहेंगे हम, सिस्टर्स, जेड साउंड इज देयर. हियर डॉग्स, ज, डॉग्स, डॉग्स नहीं कहते, डॉग्स. जॉब्स, ज साउंड इज देयर. ज, वॉइस्ड साउंड में ज. अनवॉइस्ड. ये वीडियो बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है. आप बहुत छोटे बच्चों को फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड और द यूकेजी स्टूडेंट्स और द किड्स को आप वॉवल अकेले ही पढ़ा सकते हैं. दिस वॉइस साउंड्स, अनवॉइस साउंड्स रिलेटेड और टू थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए है. क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि इसके पीछे जेड की आवाज़ क्यों आती है. फ्रेंड्स, बैग्स, डॉग्स, वाई वी आर नॉट कॉलिंग डॉग्स, राइट. सो ऐसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं. सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो. इन हायर क्लासेस दे विल अंडरस्टैंड, or in another video I will cover the solution or the problems there, difficulties to understand. छोटे बच्चों के लिए वॉवल्स ही सही है. और द रूल नंबर 1 ऑलरेडी जैसे हमने पढ़ लिया है, दैट इज़ कॉमन, वेरी कॉमन. दिस रूल इज़ डिफ़िकल्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ये रूल मत समझाइए छोटे बच्चों को. जब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई इट इज़ देयर, जेड की साउंड क्यों आती है, देन आप उनको पढ़ा सकते हैं. थर्ड फोर्थ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप. और फॉर जस्ट नॉलेज ओनली, ताकि आप जब कोई क्वेश्चन हो तो आप पढ़ा सकते हैं, उनको बता सकते हैं. सो आई होप दिस वीडियो इज यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया गया है कि टू साउंड्स स और ज. टू एग्जाम्पल्स, सिट और इजी, जेड वेयर वी हैव टू यूज. तो मोस्ट ऑफ टाइम students or the kids, they are asking questions to parents or to teachers, why bags like z क्यों हम बोलते हैं पीछे. तो दिस इज़ वेरी important for everyone for knowledge. This video, I hope you like or you understand,
और नॉलेजेबल वीडियो है ये. Gives us the thumbs up if you like this video. Subscribe the channel, hit the bell icon to get the notification of latest interesting video or knowledge. Thank you.